तुम क्या क्या काम करती हो मुझे वो बताओ, तुम्हारा अभियान क्या है लड़कियों के साथ? मेरा ये है कि मैं लड़कियों के मैं एक शिक्षित हूँ। मैं हमारे गांव में सिर्फ मैं ही एक पहली लड़की थी जो 12वीं पास थी। बाकी मतलब लड़कियों को घर से बाहर भी निकलने देता थी। मेरा ये रोल है कि मैं मतलब कि लड़कियों को मतलब एक भी लड़की, ऐसी लड़की हो चाहे लड़की हो, एक भी स्कूल से शिक्षा से वंचित ना रहे, सभी बच्चे पढ़े और आगे मतलब शिक्षा होगी तो अपने मतलब हर किसी में अपने गांव में भी विकास करवा सकते हैं। इसलिए मैं मतलब जो भी हमारे गांव में मतलब शिक्षा से वंचित उनको घर घर जाके माँ बापों को भी समझाना पड़ता है हमें। कोई तो हमें ऐसे भी मिलते हैं कि शराब पीने वाले, वो भी मिलते हैं कि तुमको क्या पड़ी है हमारे बच्चों को मतलब कहने के लिए, हमारे बच्चे बड़े होंगे और हमारे कमाएंगे और खेतों में काम धंधे पर जाएंगे। लेकिन उनको भी किस तरह हमें समझाना है ये हम जानते हैं कि शराबी लोगों को किस तरह समझाना पड़ता है, तब जाके वो मानते हैं कि आज आके। फिर मेरा ही उदाहरण मैं देती हूँ। मैं एक पहली लड़की हूँ जो गांव में पढ़ी लिखी और मैं आज मतलब वार्ड पंच बनी और मुझे सरपंच बनना है और मैं 11 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया जाके आई हूँ और 30 सितंबर को रिटर्न आई हूँ। मैं भी नहीं गई हूँ अभी तक ऑस्ट्रेलिया, तुम जाकर आ गई। सुशीला तुम अपनी कहानी सुना हमें। मैंने जब सुमा की कहानी देखी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सुमा की जगह अपने को फील कर रही हूँ। सुमा के माँ बाप ने उसको अपने से दूर किया उनकी गरीबी की वजह से, तो मुझे भी मेरे माँ बाप ने अपने से दूर किया, लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया कि मुझे पढ़ाने के लिए ही दूर किया था। उनके खुद के खेत नहीं थे तो उन्होंने अपने मामा के पास मुझे रखा, जहाँ वो पैसों तो दे नहीं सकते थे क्योंकि इतने हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उसके बदले में गेहूं वगैरह वो जो भी होता था वो देते थे। 10वीं तक की पढ़ाई मैंने की। 12वीं पास करने के लिए मेरे छोटे वाले भाई बहन भी वहाँ आ गए थे, तो इतना पैसा था नहीं। अगर मुझे पढ़ना है तो कुछ तो करना होगा। उसके लिए मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती थी। सुबह जल्दी उठ के घर का काम करना, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, शाम को ट्यूशन लेना, एक्स्ट्रा क्लासेस लेना, रात को काम करने के बाद 12 बजे के बाद मैं फ्री होती थी, पढ़ाई कर पाती थी। और इतना सब करने के बाद जब माँ बाप जो है दूसरों गांव में काम करते थे, वापस आ गए अपने गांव में, तो मैं भी अपने घर आ गई। तो वहां आके देखा, जब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी तो वहां के जितने भी औरतें 15 अगस्त के दिन प्रोग्राम होता है, सारी स्कूलें एक साथ होती है, तो वो लोग उस कार्यक्रम को देखने नहीं आए थे, वो ये देखने आए कि ये देखो ये लड़की जो पढ़ाई लिखी हुई है। यानी मेरे समाज में मैंने पढ़ लिख के कोई बुरा काम कर लिया हो, वैसे तो अंगुली से मुझे बता रहे थे। इतना बुरा फील हुआ मुझे उस वक्त कि नहीं, अब बस जो है तो हो गया, अब लड़कियों को पढ़ाना ही होगा। ये ऐसी मान्यता कब तक हम लेंगे। उसी के बाद एजुकेट गर्ल्स ने मेरे को सपोर्ट किया, मैं उसके साथ जुड़ी और उसके बाद मैंने एक मुहिम सी छेड़ ली थी। हम घर घर जाके डोर टू डोर सर्वे करते, कोई ऐसी लड़की नहीं हो जो 14 साल की है और स्कूल से घर रह रही हो, और उनके लिए हम नियमित स्कूल में जाते हैं, स्कूल से भी लिस्टें लेते हैं। और उसके आगे हम लोग ये भी ध्यान रखते, 13 लोगों का हमने बाल सभा का सदस्य बना रखा है। वो मेंबर जो है वो हमारे CID पर्सन है पूरे गांव के, और उसी के द्वारा मैंने 2 बाल विवाह रुकवाए हैं। सिर्फ शिक्षा मेरा मुद्दा नहीं है। लड़कियां क्यों नहीं पढ़ जाती, क्योंकि उससे छोटे होने से शादी कर लेंगे तो वो पढ़ेगी कैसे, उसके तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे हो जाएंगे, फिर वो उनको पालेगी पोसेगी, क्या उसकी जिंदगी तो नरक हो गई। तो मैंने 2 बाल विवाह रुकवाए और आज मेरे गांव में जितनी भी लड़कियां हैं वो कम से कम सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और उसके आगे से कर रही है, क्योंकि मैंने ताने झेले हैं लोगों के। जब मैं कॉलेज करने जाती थी, यानी कंप्यूटर कोर्सेज करने के लिए बाहर जाती थी, तो लोग ताने करते ये देखो रोटी पीने जा रही है, यानी टाइम वेस्ट। मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ और मैं कैसे कहीं पूरा काम करने जा रही हूँ, वैसे वो मेरे को इंगित करते थे। लेकिन अब जब मैं अपने पांवों पे खड़ी हूँ, मैंने हमारे एजुकेट गर्ल्स का जो है फेडरेशन बनाया है, जिसमें 3-4 पंचायतों को एक क्लस्टर बनाया है, उसपे एक क्लस्टर हेड होता है, फिर उन सारे क्लस्टर को मिला के एक ब्लॉक बना है, ब्लॉक हेड होता है।
translate this, is exactly what Holly was saying. That when you have your son, people say congratulations, and when you have your daughter, they say, oh my God, amazing, you're going to be looked after for the rest of your life. That is what she's talking about, that when you have a son, he's going to get married and only listen to his wife. But when you have a daughter, she's the one who's going to give you your meds when you're old. And these are brave, brave girls who took their lives in their own hands from Teen Balika, and Educate Girls in 2007 started with working in just about 50 villages. And today, almost 4,500. Ladies and gentlemen, this is Educate Girls. Now, coming to Room to Read. ये है पिंकी. Hi पिंकी. मुझे नहीं सबको. और ये है फरहीन. अभी फरहीन जो है, she's the president of this children's club, and पिंकी जो है वो बहुत proud member है. Correct है पिंकी? आप बहुत प्राउड मेंबर हैं? अच्छा, अभी फरीन तुम अपनी जरा कहानी बताओ. I should just leave. They got this done. फरीन तुम अपनी कहानी बताओ. मेरा नाम फरहीन है. मैं बालिका शिक्षा कार्यक्रम से जुड़ी हुई हूँ. वैसे आपको देख के ही पता चला होगा मैं मुसलमान हूँ, और मुसलमानों में ज्यादातर लड़कियों को एजुकेटेड नहीं किया जाता, बहुत कम करा जाता है. और जब से मैं बालिका शिक्षा कार्यक्रम से जुड़ी हूँ, तब से मैं अपनी बात रख पाती हूँ. मेरे मम्मी पापा अब लड़कियों की पढ़ाई को समझ पाए, उसके महत्व को समझ पाए कि कितना इम्पोर्टेंट है लड़कियों को पढ़ाना. और मुझे गर्व है कि अपने माता पिता पे और रूम टू रीड पे जो मुझे इस टाइम और इस मंच को मुझे पहुंचाया है. थैंक्स. मेरा माइक चलता नहीं, मैं आपका बोरो कर सकती हूँ. आपको ask permission. पिंकी मैम, आप जरा अपने बारे में बताएंगे हमें थोड़ा सा. मेरा नाम पिंकी है. मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ. मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं रूम टू रीड बालिका शिक्षा कार्यक्रम से जुड़ी हुई हूँ. हमारे इस कार्यक्रम में एक चाइल्ड क्लब है जिसकी मैं मेंबर हूँ. हम इस मेंबर में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जैसे आने वाला फेस्टिवल. पर हमारा मेन मुद्दा तो यही होता है कि हम लड़कियों की पढ़ाई आगे कैसे जारी रखें. मेरी एक सिस्टर कजन जो कि सुमा की तरह घर घर में काम करती थी, मैंने अपनी संस्था वाली दीदियों के साथ मिलकर उसका स्कूल में दाखिला करवा दिया, जिससे वो अब इस स्टैंडर्ड में पढ़ती है. वो कोई काम नहीं करती. इससे हमें अपने संस्था पे बहुत प्राउड फील होता है. जल्दी से सांस ले लो. आई थिंक तुम सांस लेना भूल गई थी. इतनी जोर से आई वाज टेलिंग द स्टोरी एंड फॉरगॉट टू ब्रीथ. आपने सांस ली? कितनी बार ली थी? She counted how many breaths she took. Amazing, amazing, amazing girl. क्या पकड़ सकती है मेरे लिए? नहीं चलता है. So stories like Suma and all these wonderful ladies that are present here unlock something beautiful. It unlocks a spark that makes people see themselves and the world. A spark that strengthens conviction and sparks them to take action. Now, I would like for us to see some of the things that Girl Rising has sparked across the world. Entire event together. Thank you, Tess Joseph. You are Girl Rising. Just like one girl needs the courage and support of people around her to rise, we too at Girl Rising are powered to strong and meaningful partnerships to really drive impact. It is my pleasure to introduce Priya Nayak, founder Samhita, to lead a discussion on the diverse ways companies have and can amplify the impact of Girl Rising. And I request our esteemed panel to their seats on stage. Please welcome Neeta Butra, President Vicky Flo, Dejani Ghosh, Managing Director and Vice President South Asia in Tao. And last but not the least, it's always important to have men in the campaign as well. Lloyd Matthias, Director of Marketing, HTML. Over to you, Priya.
Okay, we're finally getting this right. Okay, Samhita, the organization that I founded, builds partnerships between companies, foundations, individuals, philanthropists, and social organizations to maximize social impact. Getting girls past 10 maximizes social impact. We're all familiar with the barriers that girls face every day: social, cultural, economic, religious, and we're here today to talk about how to break those barriers. There are two ways to do it. The first is really us as individuals. All of us are change agents. All of us can be very powerful change agents, but we can't do it alone. Getting girls past 10 is complex. That's the reason why we're all here. And the only other way to do it is to do it collaboratively. To really engage with the government, with foundations, with philanthropists, with NGOs, with individuals, with companies, to do this together. Today on my panel, I have 3 individuals who, through the power of the organizations that they represent, have done tremendous work in the area of girl and women empowerment. Nisha, to start with you, can you tell us a little bit about what Wikito has done to empower both girls and women in India? Yeah, Priya, with pleasure. It is working now. Well, over the past 30 years, Fiki Ladies organization, through its chapters across the country, has been working at the forefront of the movement of women empowerment in India by promoting entrepreneurship, skill building, capacity building for women from various social backgrounds. We strive to live up to our motto, the power to empower. We have given cycles in Maharashtra to girls to go to schools so that they can commute, and these cycles are left behind for the next batch to take. We've constructed schools, the toilets in girls' schools in Maharashtra, Tamil Nadu, Northeast, and these encourage girls to go to school. Our continuous endeavor is to inspire, engage, and empower girls in every way. And we are proud to be, give our wholehearted support to Girl Rising India. Thank you. Virjani, Intel has been a supporter to Girl Rising from the very beginning. Can you tell us a little bit about how corporate India can leverage a platform like Girl Rising? Yeah, sure. Before I do that, Holly, I've seen this movie twice, and whether it's the whole movie or the individual stories, I just can't help being so moved. So thank you, thank you, thank you. I mean, it's just amazing. I'm going to borrow something that the ambassador said. She said that investing in girls is the smartest decision that we can make. Investing in girls, I'll just adapt that a bit. I think investing in girls is the smartest business decision that corporate can today make. Frida gave you a lot of numbers on the economic impact of educating girls. If you're a business leader today, 85% of your purchase decisions are being made by women. For those in the room who still don't know, 50% of this world are women. And we are making 85% of the purchase decisions. Now, how does a room full of male engineers figure out what these women want? I mean, no offenses, but you guys still haven't figured that piece out. So as corporates, we have to invest in women, from engineering to product marketing to sales to leading the company. And there's enough data out there to show that companies that have women on boards, that have women in the top management room, at the table, are doing much better than others. So coming back to corporate India, much more than any other corporate in the world, needs to embrace this challenge and needs to really figure out how to invest in girls so that they can invest in themselves, because ultimately that's all it is. And I think the Girl Rising is one of the best platforms we have, because if you want to have this, if you want to bring about a change, you can only do that through dialogue. You cannot do it with anything, because ultimately what are you fighting? You're fighting stereotypes. That's all you're fighting. You're just fighting a whole lot of biases. A lot of it is unconscious, and you're fighting stereotypes.
So you have to start the dialogue. And we as Intel, we value this partnership so much because what you've given us is that platform to start the engagements with government, with educators, with parents, and of course with the students. And I think that's what corporate India needs to look at. It's no more CSR. It's no more corporate social responsibility. It's a business decision. And you have to embrace these kind of platforms to give it the visibility it needs. Holly? Lloyd, HP is now a proud supporter of Girl Rising. Can you tell us a little bit about why this partnership was so compelling? Actually, at HP, Girl Rising is not an option, right? The chairperson of our corporation, Meg Whitman, is a lady, for starters. But I think importantly, I'd echo what Debjani said. I think it's real business. So the way we look at it is Girl Rising is not something which is popularly called CSR, corporate social responsibility. I think we take it as something that we do mainstream. I represent the marketing stream. And our belief is that anything can work only if it's adopted wholeheartedly by the company. So it's about what our employees do in terms of how they can support women's empowerment. It's the kind of inclusion policies that we do in terms of getting people on board. And specifically with Girl Rising, we saw a moving clip from the film. I think really our belief is that through technology, through our products and services, we genuinely believe that what we can do is more than just financial support. It's really about how we can get the whole organization supporting this cause. A few months back, we ran a campaign called Bend the Rules, and we really saw this as a logical extension, that when a girl is educated, she not just bends the rules of society, she actually changes her family and the entire social circle around her. So far as this is a cause that we strongly believe in, and we're really proud and delighted to have the Girl Rising set up their office here in India. And how would you like to take this partnership forward? Oh, in many ways. So like I said, one is we try to extend the Bend the Rules platform, and we believe Girl Rising is a logical extension to it. Two is, as part of what we do, a lot of our focus as an IT service provider in terms of the printers and the computers we make is really focused at the education sector. So we really see this being a logical extension. We certainly will want to take this forward. I think thirdly, it's really about the Bend the Rules platform. We see Girl Rising's extension and really how we can use all our assets, both media, marketing, in terms of taking the message across to a larger community of people in India. That's exactly what we need. We need business to think strategically about social issues. So Johnny, last question for you. Why is the Girl Rising platform so strategic to Intel, and what have you really gained from it, and how do you see it really benefiting the organization and your stakeholders as you move forward? Well, as I said, we need to hire, first of all, a lot more women than what we currently employ. More and more of our consumers are women. So we really need to understand how the women mind works, what are they looking for, how do they use their technology, so that we are able to cater to that. And to do that, we need to hire many, many, many more women than what we currently have. So what this enables, and if you want to do that, you have to start at the bottom of the pyramid. You have to start at the beginning of the pipeline, right? You have to start in schools. You have to start with education. First thing, you have to get more and more girls interested in STEM, science, technology, and math education. That's critical. Most girls feel it's not cool to be good in science or maths. We have to go in and change that. So that's a huge area of focus for Intel. One of our biggest efforts in education is in getting girls